Welcome all. जस्ट अ मिनट, मैं आप सभी को को होस्ट कर देता हूं, जो पार्टिसिपेंट है आज के वेबिनार के। ठीक आहे, गुड आफ्टरनून. आजच्या या वेबिनार मध्ये आपल्या बरोबर सिव्हिल इंजिनिअरिंग आयआयटी बरोबर ओरिएंट टाइल्स या पण सहभागी झालेले आहेत. पुढचं इंट्रोडक्शन सिव्हिल इंजिनिअरिंग आयआयटीच्या वतीने स्वप्नील ओहाळ देतील. मी सर्व पार्टिसिपंट आणि कंपनीचे डायरेक्ट जे स्टाफ आहेत त्यांनी सर्वांचं वेलकम करतो आणि आपण सेशनला सुरुवात करता येईल. ठीक आहे. येस स्वप्नील, हँड ओव्हर टू यू. Yes, sir. Thank you. Sir, thank you very much. We are here with the webinar again for about a well-known company known as Orient Limited. This is a very well-known company all over India. We have seen many branches and their achievements. So the benefit, the use behind this webinar was to get this major unknown concept to our students and learners, all the attendees. ये वेबिनार हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे जो बैचेस, हम जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं 6 साल से, उन बैचेस के स्टूडेंट्स, लर्नर्स, अटेंडीज को ये टाइल्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर मार्केटिंग प्रोसेस की अच्छी जानकारी मिले. तो हम आज यहाँ पे वेबिनार स्टार्ट करते हैं. आई हियर respectfully welcome Mr. Praveen Munde sir, founder of CEIIT, and the whole respected team of Orient Bell, Mr. Bhanuji, Mr. Nitin sir, Divya madam, and Sima madam. Thank you. Thanks a lot. So here I will start the introduction with sharing a small PPT of our both organizing and webinar, and then you can start your guidance. So here is our PPT. So today's webinar is on manufacturing of tiles, gaining information on manufacturing of tiles and its marketing and sales process technique guidance through Orient Bell. So here are some images from Orient Bell tiles, which are very popularly famous. So the next page. So welcome to CEIIT. Here is some information about our institute we want to share with you. We are working from 6 years in this industry. We have a huge count of students. We are training up civil engineering students and non-technical students also in civil engineering fields. Our institute has trained more than 75,000 students till now in civil engineering field and non-technical field. Used to teach them tenders and all. We will show you ahead. This is some images of our classroom and office located at Pune, Deccan.
So the currently going on courses at our institute are Master of Civil Engineering. A non-technical student can do this. A civil field student can do this to gain all the knowledge from basic to master level through this course. Government contracting course to become a government contractor. Cost engineering means the billing course, the materials and all the amount budget. Interior designing course, which has a great lead nowadays, and real estate property. You all know that. So here are the information about Oriental Tiles Limited Company. As Seema Madam has shared with us, Oriental Limited Company is the among most largest manufacturers of wall and floor tiles. They have been established in 1977. First manufacturing ultra vertified tiles. Their product designs and development are a continuous process at OLB. The speaker will share a deep knowledge about their company ahead. I request them. So these are the award win by Orient company. I have shared here, and this is the main showroom of Orient Bell Tiles located at Pune. So which our learner participants who have joined the meeting who wants more knowledge about this or contact for any orders can connect through this. And what are we going to learn in this webinar are the varieties of tiles which are being manufactured by Orient Bell companies, information on tile manufacturing process, marketing and sales process technique, machinery or tools used for manufacturing a tile, chemical and material used in manufacturing. And after a tile is made, what is the flooring installation process? They will also know the difference between ceramic and vertified or rectified tiles, application of tiles, where we can use all the tiles, specification, strength and cost of tiles, and the most important is scope of this. We have a lot of number of students or learners in our institute, so they wanted to know what is the scope in this field for jobs or business. So we need your proper guidance, sir. So let's start here the webinar. These are our speakers, Mr. Respected Bhanu Prakash sir, Senior Manager from Technical Support Group, Mr. Nitin Kumar sir, Category Manager Marketing, and Mrs. Divya Chauhan, Assistant Manager Marketing. So here I request Bhanu Prakash sir to share the knowledge of technical and their product, technical process and their product. So you can start. Manu, you can start. Thank you, sir. Just now I'm sharing my screen. Thank you, sir, for giving opportunity to share some information and technical awareness on the tile manufacturing process. So today, Welcome, sir. I'm majorly covering 4 topics: material and manufacturing of tiles, properties of tiles, varieties of tiles, and its application where we can use. Are you able to see my screen properly? Yeah, we can see your screen, Manu. So, Oriental Company started in 1977. In 1980, our chairman, Mr. M.K. Thakur, is taken the control of overall entire operations manufacturing plant, which is located in Secunderabad, near to Noida. So in 1995, we listed our company in BSE Sensex. In 2000, we certified for the ISO 14000 environmental friendly policy. In 2004, again, we certified for ISO 9001, 2001 and washers. These are the quality certifications. And in 2005, we started our company-owned tile boutique. It is for the display of the tiles and sales perspective. Now we are having almost 150 plus OVTs as well. In 2010, we, as Oriental,
acquired a Bell company. Earlier, it was Orient Tiles Limited. Now it is a Orient Bell Limited after the acquisition. So in 2015, we certified our manufacturing process and product for the ISI specifications, which is manufactured at a Secunderabad factory. So we are certified for quality certifications like BROSHAS, ISO 9001. Plus, we are also part of GRAHA member, and also our product is certified for European Export Quality (CE). And our company manufacturing products are certified into Indian Standard Specification 15622 IS specification number. So we have 4 manufacturing facilities. One is at Secunderabad in UP, near to Delhi. And second, we have manufacturing factory at Hoskote. And third, at Dora. And fourth, we have 2 joint venture manufacturing facilities at Morbi. So we are making almost 30,000 million square meter per annum, all the entire 4 manufacturing facilities. So we do manufacturing ceramic wall, floor, place vitrified, double charge, full body vitrified tiles. So we have almost 2,500 plus channel partners across pan India. We have a strong presence in north, northeast, and also in southern part. We have less presence in especially western area. We are focusing on that part. So what is a ceramic tile? So everyone knows ceramic tile, but we don't understand what is a ceramic tile. Ceramic tile, actually, it is a thin slab, or it is made of a mixture of clay and minerals, and compressed at a high pressure, then fried at a higher temperature, applied surface with a glaze and decorative printings, and then fried to acquire the required strength. So this is the basic understanding. But ceramic tile means it is actually made of clay minerals. So it is a synthetic material, we can say. So normally everyone say they will compare with a stone or natural marbles or like this. So we cannot compare tile and marble or natural, because both are different. So marble and stones are, it is basically from earthy material, which is available in the nature. Whereas ceramic tiles are manufactured from the minerals with a synthetic process. So because there is a value addition in the process to convert into or better look in comparison of stone or marble. So what are the raw materials normally we use? We use 3 varieties of clay particles in the manufacturing process. So in any ceramic tile body, there are 3 major materials. One, clay. Clay, again, there are 2 varieties of clays, ball clay and china clay. Again, basically, it is a composite of alumina, silica formulations, plus with a certain water content in the clay minerals. The second, we use feldspar. Feldspar, again, it is a non-plastic raw material, which having, again, alumina and silica as a base chemical oxides component. And then we use structural materials, again, silica. Silica is purely SiO2, again, it is an oxide-based material. So we use these 3 different materials in certain formulations, where alumina and silica with a certain firing temperatures, they will form a multi product with alumina, silicon, certain oxides of sodium or potassium, which will in combine form a triaxial body. Triaxial body having a huge firing temperature range from 1100 degrees to 1250 degrees, which is having a huge temperature range, where you can modify your formulations to get different behaviors or the
physical parameters when you fight at a different temperature, different zones. Based on the formulations, the body will vary. If you see general formulations, it almost the content will be same. But with the modification of temperature, with the modification of curing process, the body will act differently. So that where the product differentiation starts. So basically, tile bodies, which is you can see whenever you are seeing any tile. At the bottom side of the tile, you can see sometimes in a red color, sometimes in off-white color, sometimes in gray color, sometimes in off-white to white color. These are all depends on the raw material which we are using for the manufacturing process. There is no difference. If it is a red color and then you can say define as it is inferior. It cannot be. The color depends on the raw materials which we use to achieve the finished product. Sometimes the color because of the minute contaminations which available on the clay minerals. That is what the main basics of the clay side. Second, inner tile formulations, we see engobe and glaze. There are two technical terms. Engobe again, it is made of a clay with a certain minerals which will used as a bonding between the glaze and the body. And parallelly, it has two different main aspects. One is it is act as a bonding between the glaze and tile body. Second, it will act as a impervious layer between the body and to the glaze. So it will stop the seepage of water from body surface to surface. So it will act as a two purposes. And third one, it will improve the texture of the surface glaze, which we used for the decoration of the process. So with the engobe usage, what will happen? The glaze will have a brighter tone, and parallelly it will have a without a wavy surface. That is what the two-way purpose of the engobe. And again, glaze. Glaze, it is for the decoration purpose, and also it will give a finish to the engobe or the tile as per our requirements. So the glaze could be a matte glaze or a satin glaze or a glossy glaze. These are all depends on the formulation. Again, the formulation with the slight modifications of silicon, sodium, potassium, calcium, alumina, coloring oxides, opacifiers. So with the slight modifications of the formulations, we can achieve or play with the finishes. If the silica content is more, the surface will have more glossiness. If the silica content is less, the surface will be tend to matte in finish. That is the background of the glazes. So how we manufacture the ceramic tiles? So it is a simple process. I am showing here the process flow from raw material storage to dispatch. So I will take you through stage-wise process where I will give you a little more information about the process side. The process will be raw material storage, ball milling, spray drying, pressing, drying, then glaze preparation, glaze application, decoration, printing and firing, then inspection, packing, warehouse and dispatch. This is the minimum process, stage-wise manufacturing process, you can say. So the first one is the pictorial image I'm showing here. Later, I will take you through manufacturing process video so that you can understand in a better way. The pictorial image where you are seeing left side is a ball mill, where it is used for the grinding of the clay minerals to form a homogeneous body formulation. That formulation, what we'll call as slip. Hello, sir. Sir, you can, sorry to interrupt, but you can explain the process in Hindi. It will be more comfortable and understandable for students. Yeah, noted, sir, noted.
If any mistakes in Hindi, please excuse me. जो नॉर्मली टाइल को ग्राइंड करने का टाइम पे, टाइल का बॉडी फॉर्मुलेशन बनाने के टाइम पे जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को बाल मिल के अंदर ग्राइंडिंग मीडिया के साथ और वाटर के साथ ग्राइंडिंग करते हैं. इसको हम वेट मिलिंग कहते हैं. अगर यही प्रोसेस ड्राई प्रोसेस में भी होती है बिना पानी के, वो उसको ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं. Both the process are to acquire homogeneous body formulation so that हमारा जो भी formulations है वो formulation अच्छा mix हो, so that आपका जो भी finished product है, मतलब इसका जो outcome आएगा बाल मिल का बाहर, हम स्लरी कहते हैं उसका नाम, वो स्लरी homogeneous रहेगा. Homogeneous in the sense उससे आपका जो बैच बनेगा वो बैच कंसिस्टेंसी रहेगी. एक बाल मिल में हम 40 टन से लेकर 60 टन का एक बैच बनाते हैं. इसमें पानी भी लगेगा. ग्राइंडिंग मीडिया का दौरान पे हम पेबल्स यूज करते हैं, कभी एल्यूमिना बेस होगा या सिलिका बेस होगा. और इसका जो स्लरी आउटकम है उसका हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं. पार्टिकल साइज माइक्रोन में चेक करते हैं, उसका रेसिड्यू क्या है. वो रेसिड्यू डिफाइन करती है आपका फायरिंग प्रोसेस का टेम्परेचर को और आपका प्रोडक्ट का बिहेवियर को फायरिंग करने के टाइम पे. और ये जो स्लरी को हम सीव मतलब जाली में से पास ऑन करते हैं. उस जाली में से पास ऑन करने का टाइम पे उसमें जो नॉन ग्राइंडिंग मटेरियल है, मतलब जो पिसाई करने का टाइम पे वो नहीं घिस गया और रेसिड्यू कहते हैं, वो रेसिड्यू को हम निकाल देते हैं और जो होमोजेनस मिक्स है उसको आगे पास ऑन करते हैं. ये जो स्लरी एक बार बन गया उसको हम स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं. वो स्टोरेज टैंक में से हाई प्रेशर पंप के थ्रू, ये एक हॉट एयर चैम्बर रहता है, इसको हम स्प्रेड एयर कहते हैं. ये स्प्रेड एयर में हम हॉट एयर चैम्बर रहेगा, टेम्परेचर करीबन 600 डिग्री का आसपास में रहेगा. उस टेम्परेचर में नोजल के थ्रू स्प्रिंकल करेंगे. स्प्रिंकल करने का टाइम पे वो ग्रैन्युल्स बनेगा. इट इज लाइक ए फाइन ग्रैन्युल्स, बिकॉज जो हॉट एयर है उसमें भी जितना भी मॉइस्चर है और मींस वाटर, वो वाटर को निकाल देगा, एवापोरेट करेंगे और यू विल गेट ए ड्राई ग्रैन्युल्स. इसमें हम ये इंश्योर करेंगे वो जो ड्राई ग्रैन्युल्स है उसका टेम्परेचर मॉइस्चर करीबन 5 to 6% तक मॉइस्चर होने जैसे उसको हम इंश्योर करेंगे. बिकॉज वो 5 to 6% आप नेक्स्ट प्रोसेस में जब आप टाइल को प्रेस में कॉम्पैक्ट करने का टाइम पे वो आपको टाइल का शेप रिटेन करने के लिए मदद करेगा. और पैरेलली ये जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक प्रेसेस है. ये हाइड्रोलिक प्रेसेस में सिंगल कैविटी को लेके 4 कैविटी तक टाइल रहेगा. बेस्ड ऑन द साइज जो डाई का कैविटी हम अरेंज करते हैं, वो डाई कैविटी में पाउडर फिल करेंगे और वो पाउडर को हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू, हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर के हिसाब से वो सिलेंडर को हम कॉम्पैक्ट करेंगे. ये करीबन प्रेशर रहेगा 200 बार का प्रेशर से लेकर 400 बार तक प्रेशर रहेगा. जब कॉम्पैक्ट करने के टाइम पे वो कॉम्पैक्ट करके हमारा जो रिक्वायर्ड साइज का शेप हम बनाएंगे. समटाइम्स इट इज अ प्लेन सरफेस, कभी वो पंच और एम्बोस्ड डिजाइन बनाने के लिए भी ये कैविटी हमें मदद करेगी. उसके बाद ये जो टाइल बाहर आने के बाद उसको हम ड्रायर में सुखाने का टाइम पे जो 5 to 6% का जो मॉइस्चर हमने कह रहा है वो परसेंटेज एक परसेंटेज का अंदर आने जैसे ड्रायर्स काम करेगा. और पैरेलली जब ये टाइल को हम ड्राई करेंगे और टाइल में स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स हम जो भी उसमें यूज कर रहे हैं. जैसे वो ड्राई करने के बाद वो टाइल आगे नेक्स्ट स्टेज में प्रासन होगा. वाटर स्प्रे करेंगे बिकॉज सरफेस टेम्परेचर को एकदम ज्यादा रहेंगे, उस पर डस्ट रहेगा. वो डस्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन में कभी पिनहोल्स या कोई एप्लीकेशन प्रिंटिंग में प्रॉपर सपोर्ट नहीं करे, इसलिए हम पहले वाटर स्प्रे करते हैं.
उसके बाद एंगोब एप्लीकेशन करते हैं इस प्रकार का, उसके बाद ग्लेज एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग, हम जो भी प्रिंटिंग होगा वो हम करते हैं। ये प्रिंटिंग के बाद, प्रिंटिंग में मैं एक पॉइंट आपको इधर ऐड करना चाहूंगा। देयर आर 3 तरीके का प्रिंटिंग होती है। एक है पहले फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग, दूसरा जो है रोटो कलर प्रिंटिंग, और तीसरा जो है डिजिटल प्रिंटिंग। जो डिजिटल प्रिंटिंग है अभी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी हर कोई कंपनी इसको यूज कर रहा है। अगर यही हम 15-20 साल पुराना देखते हैं, हर कोई यूज करते थे फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग। उस टाइम पे डिजिटल प्रिंटिंग नहीं है, रोलर प्रिंटिंग नहीं है। इसमें हर टाइल जब भी इसका स्क्रीन के नीचे जाएगा, उसके ऊपर एक रबर रहेगा, उसको टाइल को स्क्वीज करेंगे प्रिंट को पास ऑन करने के लिए टाइल के ऊपर। उसी तरह का ये रोटो कलर में सिलिकॉन रोलर्स यूज करेंगे। इसमें लेजर के थ्रू एंग्रेविंग किया जाएगा डिजाइन को, और उस डिजाइन को हम टाइल में पास ऑन करने के लिए यूज करते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग में इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब टाइल का सरफेस पे कोई प्रकार का कॉन्टैक्ट होगा नहीं। ये एक इंकजेट होगा, इंकजेट टाइल के ऊपर स्प्रे करता रहेगा डिजाइन। इसकी वजह से आप किसी एम्बोजिंग टाइल को या फ्लैट टाइल को या स्टोन फिनिश लाने के लिए हर तरीके का एज टू एज, मतलब कहीं भी आप जब टाइल को प्रिंट करके देखेंगे, ये प्रिंटिंग का कहीं गैप नहीं रहेगा। वही एक खासियत है डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग का कुछ मेजर एडवांटेजेस है। इसका जो फिनिश है या ग्राफिक डिजाइन का जो प्रिंट है, प्रिंट क्लैरिटी है, ये 80 dpi का लेवल पे है, और ये पुराने तरीके में उससे लेके बेहतर 360 dpi तक इसका फिनिश रहेगा, ताकि ये रियल लाइफ में जो मार्बल में फिनिश देख पाते हैं, जो फिनिश रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर इसमें हम लेके आ पाएंगे जो मार्बल डिजाइन में स्पेशली। और जो प्रिंटिंग दौरान पे 2 तरीका होती है हमारा फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग का, जो पुराना तरीका जिसे मैं कह रहा हूँ। पुराना तरीके में क्या है, इधर F1, F2, F3 लिखा हुआ है, अगर आप इमेज में देखेंगे तो। जो पुराना तरीके में जो फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग है, वो हमेशा F1 का इमेज को रिपीटेड प्रिंटिंग करेगा। इट इज लाइक जो हम पासपोर्ट साइज का फोटो लेते हैं और एक ही टाइम पे 8 फोटो निकालते हैं, उसको हम काट देते हैं। उसी तरह का जो पुराना तरीका में फ्लैट प्रिंटिंग हर बार एक ही इमेज को रिपीट करेगा। बट डिजिटल प्रिंटिंग में क्या है, आप हर बार एक नया इमेज को प्रिंट कर सकते हैं, रैंडमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार का डिजाइन को एट अ टाइम आप प्रिंट कर सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज है। इसलिए हमारा टाइल्स में ये जो फेज वेरिएशन कहते हैं या रैंडमाइज्ड डिजाइन्स कहते हैं, वो एक पैटर्न मेजरली इसमें रहेगा डिजिटल प्रिंटिंग का एडवांटेज। ये इमेज आप देख सकते हैं। ये इमेज में भी आपका डिजाइन है, हर टाइल में अलग है, और हर टाइल में वो जो डिजाइन का पैटर्न है वो मूव कर रही है। इसको रैंडमाइज्ड पैटर्न कहते हैं। और दूसरा, जब टाइल प्रिंटिंग हो गया होने के बाद ये आगे फायरिंग के लिए जाएगा। जो फायरिंग के लिए जाएंगे तो क्या टेम्परेचर पे फायरिंग जा सकती है। तो वॉल टाइल के लिए अलग टेम्परेचर है, सिरामिक फ्लोर टाइल्स के लिए अलग टेम्परेचर रहेगा, विट्रिफाइड टाइल्स के लिए अलग है, ग्लेज विट्रिफाइड टाइल्स का अलग है। बिकॉज ऑफ जो भी रॉ मटेरियल उसमें हम यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए, वो प्रॉपर्टीज अटेन करने के लिए ये टेम्परेचर करेंगे। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर के पहले भी कह रहा था, जो विट्रिफाइड ट्राइएक्सल बॉडी फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मुलेशन में कम से कम 100 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का मदद करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से अपना बिहेवियर भी चेंज होता रहेगा। तो इसलिए इसमें प्रिसाइजली हम ये अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग टाइल का यूज करते हैं। और जब टाइल प्लेन का बाहर आ जाते हैं, उसके बाद हम सॉर्टिंग लाइन पे भेजते हैं। सॉर्टिंग लाइन पे एक साइजर रहेगा, एक प्लानर रहेगा।
साइजर टाइल का साइज को ऑटोमेटिकली लेजर सेंसर के थ्रू मापेंगे और उसी हिसाब से उसको आगे टाइल को सॉर्टिंग करेंगे। जो साइज का हमारा टॉलरेंस का बाहर रहेगा उसको सेकंड क्वालिटी में या थर्ड क्वालिटी में बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सेट पैरामीटर्स उसको ऑटोमेटिक सॉर्टिंग करेगी। इस प्रकार का उसमें डाटा आएगा, साइज आएगा, राइट एंगल्स मेजर करेंगे और डायगोनल भी मेजर करेगा और पैरेलली इसमें सेग्रीगेशन भी होगा। उसके बाद ये पैकिंग पे जाती है टाइल्स। जब टाइल पैकिंग जाएंगे, पैकिंग में हम इस प्रकार का इंफॉर्मेशन देते हैं कार्टन बॉक्स पे, जो इसमें एक प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, नाम के साथ में वो प्रीमियम क्वालिटी या कमर्शियल क्वालिटी डिफाइन करेंगे। उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, सॉर्टर का कोड और उसका बैच नंबर। ये यू कैन सी हियर H130419X TMB1. B1 is batch number, H is manufacturing plant का कोड है और 130419 is a date of production। इस प्रकार का बैच देते हैं ताकि फ्यूचरिस्टिक हमें बैच वाइज ट्रैक करने में आसान रहेगा। अगर कोई कस्टमर भी हमें कोई फीडबैक देता है, कोई हमें ये इस बैच में ये दिक्कत आई, उसको हमें इंटरनली अपना रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ये डाटा हमें हेल्प करेगी। इधर मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूं और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ताकि अभी तक मैंने जो भी बोला है आप एक बार आवाज आ रही है? भानु आवाज नहीं है इसमें। जस्ट 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 Bhanu, we can't hear you. Yeah, just a moment, sir. I think some disturbance in the audio, but I will explain in the while moving. ये रॉ मटेरियल का स्टोरेज है। ये रॉ मटेरियल स्टोरेज इस तरह का, हम माइन से रॉ मटेरियल जो भी आती है उसको हम इस प्लेस में स्टोरेज करते हैं। उसके बाद सॉरी टू इंटरप्ट, आपने हेडफोन लगा रखे हैं क्या लैपटॉप में? जी जी, वो अगर हटा के ट्राई करोगे तो आवाज आ जाएगी। नहीं, मैं देखा है, नहीं हो रहा है फिर भी? नहीं आ रहा है मैम। Okay. नहीं होना चाहिए। आई थिंक सम एरर। ये वीडियो के नीचे यहाँ पे अनम्यूट है, आफ्टर अंडर द सेकेंड्स लेफ्ट साइड। That's it. हाँ यहाँ पे वो वॉल्यूम का ऑडियो तो 100% है सर। Bhanu, you explain while you show this video. No? Yeah. Sorry. ये रॉ मटेरियल को हम बैच वाइज लोड करने के लिए एक वेइंग स्केल होगा। वेइंग स्केल पे हम इस प्रकार का जेसीबी से लोड करेंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड, जैसे मैंने बताया था, जो हमारा बॉल मिल्स है, बैकग्राउंड में आप देख भी सकते हैं, वो बॉल मिल 60 टन तक वजन लेगा। तो जब 60 टन का वजन होगा वो मैनुअली लोड करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम वी विल यूज
जेसीबी का जो लोडर है वो यूज करते हैं, ताकि हम इस लोडिंग को कंप्लीट करने के जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम कंप्लीट कर। नॉर्मली इसका 1 घंटे तक हम लोडिंग का टाइम लगता है लोड करने के 60 टन को। और दूसरा, इस तरह का कन्वेयर के थ्रू हम बाल मिल का अंदर लोड करेंगे। और बाल मिल का, जैसे मैंने ये बोल रहा था, ये ग्राइंडिंग मीडिया जो बाल मिल के अंदर रहती है उसको ग्राइंड करने के लिए। जब बाल मिल से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज करने के टाइम पे इस तरह का स्लरी लिक्विड कंडीशन में रहेगा। अगर आप ये इमेज पे देख रहे हैं, इस तरह का लिक्विड में रहेगा, ये सेमी सॉलिड कंडीशन में रहेगा। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है करीबन 1.8 से लेकर 1.9 तक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप स्प्रे ड्रायर पे स्प्रे करेंगे अंदर, जैसे आप इधर देख रहा है, और ये जो पाउडर है, ये पाउडर फॉर्म में आ रहा है, ये पाउडर डिस्चार्ज हो रहा है, वो पाउडर को हम प्रेस में यूज कर रहे हैं। इसमें जो मॉइस्चर, जैसे मैंने कह रहा था, 5 to 6% का मॉइस्चर रहेगा। ये कैविटी में भरेंगे। जब कैविटी में भर रहा है प्रेस में, और प्रेस से इसको मूवमेंट कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेस कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, ये टाइल्स आपका रोलर पे आगे बढ़ रहा है। जब रोलर पे आगे बढ़ेंगे, इसको ड्रायर पे हम दे रहे हैं। जैसे इसका टेम्परेचर रहेगा 250 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगी। और ये जो 5 to 6% का मॉइस्चर है, 1% का अंदर लेके आएंगे विद इन 20 to 30 मिनट साइकिल पे। और इसके बाद ये डेकोरेशन पे जा रहा है, ग्लेज लाइन पे। जैसे ग्लेज इस तरह का लिक्विड में स्टर करेंगे, और ये क्लीन के अंदर फीडिंग के लिए जा रही है। यू कैन सी द रोलर मूवमेंट, जो टाइल कैसे रोलर के ऊपर चल रहा है। और रोलर से टाइल बाहर आ गए। ये क्लीन का साइकिल करीबन 40 मिनट से लेकर 50 मिनट का रहता है। इट में वेरी ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट साइकिल। अब टाइल जो है पॉलिशिंग लाइन पे जा रहा है। इस तरह का हम टाइल सरफेस को पॉलिश करते हैं ग्लॉस लाने के लिए। और उसको टाइल को रेक्टिफाई कर रहा है। रेक्टिफाई मतलब नॉमिनल साइज के हिसाब से टाइल को फिनिशिंग कर रहे हैं। जिसे मैंने बोल रहा था, साइजर ऑटोमेटिक सॉर्टिंग करेगा टाइल को, साइज और रेक्टेंगुलरिटी और डायगोनल वेरिएशन को लेके। उसके बाद सरफेस का कोई विजुअल डिफेक्ट होगी, वो डिफेक्ट जो है, इस तरह का दो आमने सामने सॉर्टर्स रहेंगे, वो मैन्युअली विजुअल डिफेक्ट को सॉर्टिंग करेंगे। इसके बाद जो उसका पैकिंग होगा स्ट्रैपिंग के साथ, और इसको पैलेटाइजेशन करते हैं। पैलेटाइजेशन के बाद थ्रू फोर्कलिफ्ट मटेरियल जो है वेयरहाउस का स्टोरेज और ट्रक लोडिंग पे मूवमेंट के लिए लेके जाए। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मैं एक बार इसको रन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग और एक बार देख सके, ताकि
स्क्रीन दिख रहा है सर? Yes, Manu. Yes, Yeah. yes. सॉरी सर, उसमें थोड़ा ऑडियो का डिस्टर्बेंस थी। Yes, sir. सो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो टाइल को लेके, जो मैं कुछ टाइल का क्वालिटी पैरामीटर को लेके बता रहा हूँ, जो हर कोई जानना चाहिए, ताकि जब भी आप टाइल का परचेज करें या टाइल को किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, हम किस बेसिस पे या किस पैरामीटर को लेके हम टाइल को रिकमेंड कर रहे हैं वो समझना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पैरामीटर टाइल में वाटर एब्रेशन को चेक किया जाता है। तो वाटर एब्रेशन हम नॉर्मली ऐसे डिफाइन करें, अगर मैं 100 ग्राम का कोई टाइल का टुकड़ा लेता हूँ, वजन करता हूँ और उसको 24 घंटे तक पानी में रखा और उसके बाद उसमें वजन में क्या अंतर आ रहा है, उसका परसेंटेज को हम डिफाइन करते हैं। वो उसको हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तो उसमें हर टाइल का अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है IS 15622, ये 4 प्रकार का टाइल को कैटेगराइज किया हुआ है। एक है सेरामिक वॉल टाइल, उसको जिसमें वाटर एब्रेशन है 10% से ऊपर रहेगा, उसको ग्रुप B3 किया हुआ है। और उसके बाद आती है सेरामिक फ्लोर टाइल्स, इसमें जो वाटर एब्रेशन रहेगा 3 to 6% रहेगा, अगेन ये ग्रुप B2। और उसके बाद सेरामिक पोर्सलाइन और विट्रियस टाइल, जो 0.08% से लेके 3% का बीच में रहेगा। और उसके बाद आते हैं विट्रीफाइड टाइल्स। विट्रीफाइड टाइल में सबसे कम वाटर एब्रेशन होगा और इसका रेंज है 0.0 अंदर रहेगा। इसका ग्रुप जो है B1 ये। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मॉडुलस ऑफ रप्चर। इधर आप देख रहा है कि उसका जो टेस्टिंग करने का इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का इमेज है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं नीचे 2 रॉड्स है और ऊपर एक रॉड है। सो जो भी टेस्ट स्पेसिमेन है नीचे 2 रॉड्स को ऊपर सपोर्टिंग में रहेगा और ऊपर से हम यूनिएक्सल लोड उसके ऊपर देंगे। और ये टेस्टिंग में हम ये डिफाइन करेंगे जो टाइल का लोड ब्रेकिंग कैपेबिलिटी कितना तक है, और उस लोड के अगेंस्ट में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं इन केजेस और न्यूटन्स। और उसी तरह का मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर भी डिफाइन करते हैं, कितना स्पेयर mm में कितना टाइल लोड ले सकती है ताकि वो टूटने से पहले, ये डिफाइन करेंगे। इस टेस्ट में हमेशा जो लोएस्ट टाइल का थिकनेस होगा उसको हम कंसिडर करें। ये नॉर्मली डिपेंडेंट, ये पैरामीटर की पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जहां आपका लोड इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहीं टाइल को इंस्टॉलेशन मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए या कहीं और पार्किंग के लिए यूज करें, उस सर्टेन एरियाज एप्लीकेशन के हिसाब से ये की इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आमतौर पे अगर घर पे लगा रहे तो ये कोई ऐसा मेजर नहीं है, बट अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या कोई एप्लीकेशन, स्पेशल एप्लीकेशन के लिए देख रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये की इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और एक पैरामीटर है जो मोस्केल हार्डनेस कहते हैं, जो टाइल का सरफेस जो हम ग्लेज डिफाइन किया है उसके ऊपर कौन सा मिनरल स्क्रैच क्रिएट करेगी, उसका एक स्केल है। ये 1 से लेकर 10 का एक स्केल होती है। ये इसमें जितना भी स्केल हम डिफाइन किया है, ये नेचुरल मिनरल्स जो अर्थ में मिलती है वो आपका ग्लेज सरफेस को ऊपर स्क्रैच बन पाएगी नहीं बन पाएगी, वो उसके अगेंस्ट में ये स्केल को अराइव करते हैं। नॉर्मली जो ग्लॉस होगा, ग्लॉस मतलब ज्यादा शाइनिंग वाला सरफेस है, वो जल्दी स्क्रैच बनाएगा। जो मैट सरफेस है, जो शाइनिंग नहीं है, वो थोड़ा लेट स्क्रैच बन पाएगी। तो जो ग्लॉसी टाइल्स है वो हम नॉर्मली मोस्केल का 3 to 4 का बीच में रखते हैं। अगर वही मैट टाइल्स है, नॉर्मली 4 to 6 का बीच में हम डिफाइन करते हैं, जो जनरल मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आते हैं और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है पे वैल्यू।
पे वैल्यू मतलब इसको अब्रेजन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब्रेजन मतलब जो टाइल है हम यूज कर रहे हैं उसका लाइफ कितना तक उसके ऊपर सरफेस ग्लेज उसको रिटेन कर पाएगी, या उसका जो डिजिटल प्रिंटिंग है वो कितना दिन उसको रिटेन कर पाएगी, उसको टेस्ट करने का तरीका है। और इसको डिफाइन किया पोर्सलाइन एनामली इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया। इसका एक स्केल है, वो स्केल इस प्रकार का है। वो जो यूनिट आप देख रहे हैं उसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होगी, उसमें हम ग्राइंडिंग मीडिया यूज करते हैं, एल्यूमिना यूज करते हैं एज ए ग्राइंडिंग मीडिया, ताकि वो सरफेस इट इज वन टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जैसे कि हम आम दौरान पे टाइल का लाइफ कितना है हम नहीं बता पाए, उसको हम डिस्ट्रक्टिव मेथड से टेस्ट करके डिफाइन कर रहे हैं। तो हमेशा जो पे वैल्यू 5 या 4 वो वाला प्रोडक्ट हमें चूज करना चाहिए, ताकि उसका लाइफ ज्यादा रहे और उसका प्रिंट भी लॉन्गेटिविटी ज्यादा रहेगा। बाकी जो कम वैल्यूज है इट इज ओनली फॉर वॉल एप्लीकेशन, जहां अब्रेजन कुछ नहीं होगी, ताकि उसका लाइफ और उसका शाइन लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। नॉर्मली अगर स्केल के हिसाब से बात करें 1 to 3 जो है वॉल एप्लीकेशन के लिए हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं, और 4 to 5 जो है फ्लोर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। और वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेरामिक टाइल्स जो है क्रेजिंग, जो टाइल में एक तरीके का क्रैक जनरेट करता है बिकॉज ऑफ उसमें जो थर्मल एक्सपेंशन कंट्रैक्शन का बिहेवियर है, जो हमारा बॉडी हो गया, ग्लेज हो गया, एंगोब हो गया, अगर इसमें कहीं मिसमैच है वो इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलेगा। जब आपने इंस्टॉल किया 2-3 महीने के बाद, या कभी 6 महीने के बाद, कभी 2 साल के बाद, इसमें एक अलग प्रकार का अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा। उस स्ट्रेस को लेके ये क्रैक जनरेट होती है। ये बिकॉज ऑफ जो भी हम बॉडी ग्लेज एंगोब यूज करते हैं उसका थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर्स है ऑन कूलिंग साइकिल्स, वो इम्पोर्टेंट करते हैं। इसलिए हम जब भी बात करें टेक्निकली, जब ग्लेज फॉर्मुलेशन को अराइव करते हैं या बॉडी फॉर्मुलेशन को अराइव करते हैं, उसका थर्मल एक्सपेंशन को हम स्टडी करते हैं, और जो नियरेस्ट बैठता है उसी के हिसाब से हम फॉर्मुलेशन को फाइनलाइज करते हैं, ताकि आगे कस्टमर को यूसेज की पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार का डिफेक्ट ना हो। और इसके बाद और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है रेक्टेंगुलरिटी और स्ट्राइटनेस ऑफ एडजेस। जो पुराना में या से अभी कुछ साल पहले तक, मतलब आई कुड से 5 साल पहले तक, हम नॉन एज कट टाइल मार्केट में मिलता था, स्पेशली 300 साइज में या 400 साइज में, जो एडजेस है राउंडेड एडजेस मिलता था, बिकॉज मार्केट का रिक्वायरमेंट है और एक्सेप्टेंस। उस तरह का टाइलों में इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपने राइट साइड में देख रहे हैं फिगर 3 का। बट आज का तारीख में हम सारा टाइल रेक्टिफाई करके दे रहे हैं, मतलब साइजिंग और फिनिश करके दे रहे हैं नॉमिनल साइज में। उस केस में रेक्टेंगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, आपका टाइल कितना स्क्वायरनेस में है वो मेजर करने का तरीका ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सरफेस फ्लैटनेस। सरफेस फ्लैटनेस को हम सरफेस लेवल 0 के अगेंस्ट में हम टाइल चेक करते हैं। टाइल में हमेशा इधर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइड कर्वेचर रहेगा या नेगेटिव साइड कर्वेचर रहेगा। ये कर्वेचर इसलिए रहती है बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। जैसे मैंने कह रहा था, आपका ग्लेज और एंगोब जो आपका बॉडी को मैच करने के लिए कुछ सर्टेन टॉलरेंस पे हम प्ले करते हैं, अगर ये नलिफाई करते हैं बाद में टाइलों में अदर मतलब जैसे क्रेजिंग आ गया या कोई क्रैक आया, ग्लेज पीलिंग आ जाती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम कोई थर्मल एक्सपेंशन दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो टाइल के ऊपर कर्वेचर या फ्लैटनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगी। उसके चलते हुए टाइलों में बेंड हम कहते हैं जो आम दौरान पे, बट इसका एक्चुअल टेक्निकल टर्म से सेंटर कर्वेचर ज्यादा है या कम, एड्ज कर्वेचर ज्यादा या कम, उसका जो डिफरेंस है 0 लेवल, उसको हम वार पेज पर डिफाइन करते हैं। या नॉर्मली परसेंटेज टू द लेंथ कहते हैं, जो आपका नॉमिनल साइज होगा उसका लेंथ का
रेशियो में कितना परसेंटेज में ये ऊपर नीचे है वो डिफाइन करते हैं इसको। और जैसे मैंने कहा मेजर पॉइंट अगर हम बात करेंगे कितना तरीके का टाइलों हमें मार्केट में है, वो अगर एज पर स्पेसिफिकेशन बात करेंगे हमारे पास 4 प्रकार का टाइल मार्केट में, एक वॉल टाइल है, फ्लोर टाइल है, पोर्सलाइन है, विट्रिफाइड टाइल्स। अगेन इसमें विट्रिफाइड टाइल में कितना प्रकार का है, पीवीटी सॉल्युबल सॉल्ट है, नैनो है, फुल बॉडी विट्रिफाइड, डबल चार्ज, जीवीटी है। अगेन जीवीटी में क्या प्रकार का है, पीजीवीटी, डीजीवीटी, इस तरह का जितना भी मार्केट में। अगेन हम बोल सकते हैं सर फ्लोर टाइल में और कोई वेराइटी है, फ्लोर टाइल में ज्यादा वेराइटीज नहीं होगा या उनका एप्लीकेशन के हिसाब से वेराइटीज होगी, बट विट्रिफाइड टाइल में बिकॉज ऑफ द फिनिश, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन, उसका प्रोडक्ट को हम बाइफरगेट किया हुआ है। अदरवाइज टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे विट्रिफाइड टाइल में सिंगल पैरामीटर के हिसाब से बात करेंगे, एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी है, बट उसमें जो फिनिश, सरफेस, ग्लेज, अपीयरेंस, एप्लीकेशन के हिसाब से इसको हम इस प्रकार का डिफाइन किया हुआ है। और जैसे हमने बात किया कंपैरिजन की पॉइंट ऑफ से हम बात करेंगे, सारा पैरामीटर जो भी हमने अभी बात किया उसके अगेंस्ट में वॉल टाइल्स का कैसे रहेगा, फ्लोर टाइल्स के लिए कैसे रहेगा, पोर्सलाइन का, विट्रिफाइड टाइल का। अगर मेजर पॉइंट्स में मैं बात करूं, वाटर ऑब्जर्वेशन वॉल टाइल में 10 to 20% रेंज में रहती है, फ्लोर टाइल में 3 to 6%, पोर्सलाइन विट्रिफाइड टाइल में 0.08 से 3% के अंदर, वही फुल बॉडी में 0.08%। मॉडुलस ऑफ रप्चर अगर हम बात करें वॉल टाइल में एवरेज 12 न्यूटन का रहेगा, फ्लोर टाइल में एवरेज 30 है, पोर्सलाइन में 38 रहेगा, फुल्ली विट्रिफाइड टाइल्स में भी 35 to 38 का रेंज में रहेगा। और स्क्रैच हार्डनेस रहेगी वॉल टाइल में 3, जैसे मैंने कहा ये मेजरली शाइनिंग ज्यादा रहती है, लो टेम्परेचर का है, इसका हार्डनेस कम रहती है। तो फ्लोर टाइल में 5 रहेगा, पोर्सलाइन विट्रिफाइड टाइल में 6 to 7% बेस्ड ऑन द सरफेस फिनिश। अब सारा टाइल में 6 to 7% नहीं कह सकते, मोस्टली हार्डनेस कुछ स्पेसिफिक डिजाइन में ये ज्यादा रहता है। और विट्रिफाइड टाइल का एवरेज 4 to 5%, मतलब 4 to 5 का मोस्टली हार्डनेस रहेगा। और सरफेस एब्रेजन वॉल टाइल में इतना अप्लीकेबल नहीं है स्केल की पॉइंट ऑफ से, फ्लोर टाइल में 3 to 5 रेंज में रहेगा, पोर्सलाइन टाइल में भी अगेन 5, विट्रिफाइड टाइल का 3 to 4। अगेन ये जो ग्रुपिंग है पे स्केल के हिसाब से, पीईआई वैल्यू के हिसाब से, सभी अदर पैरामीटर्स लाइक सरफेस स्ट्रेन रेजिस्टेंस है, सरफेस फिनिश है, ये तो कॉमन है बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड, बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइस। हर प्रकार का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। और वी प्रोड्यूस फ्लोर टाइल्स अराउंड 2000 plus designs, 8 finishes, all different sizes, from size of 120 to 42, 30 by 30, there are various sizes are there. अगर इसमें फिनिश की बात करें, मार्बल फिनिश, ग्रेनाइट, सीमेंट, वुड, मेटालिक फिनिश, हाइलाइटर टाइप है, टेक्सचर, पेवर्स कैटेगरी में मल्टीपल वेराइटीज है, मल्टीपल प्रोडक्ट फिनिशेस है। और उसमें अगर हम एक प्रोडक्ट हमारा सत्वारी डिजाइन है, ये हम कितना डिजाइन में दे रहे हैं, किस प्रकार का दे रहे हैं, देयर आर 15 डिजाइन, 6 डिफरेंट साइजेस, और इसमें कंटिन्यूस पैटर्न भी है, एक सिंगल इमेज बनने जैसा है, इस तरह का मल्टीपल साइजेस है। अगर कोई वॉल में भी वही टाइल लगाए अलग साइज में, फ्लोर में अलग साइज में लगाए, उस तरह का चॉइस है तो सिंगल आइटम वी कैन ऑप्ट फॉर इट। और उसी तरह का वॉल टाइल में वी हैव ऑलमोस्ट 1500 plus डिजाइंस और 8 फिनिशेस है, 4 डिफरेंट साइजेस है। इसका साइजेस है 300, 600, 300 by 450 plus 250 by 375, 200 by 300। दिस इज द स्पेशली वॉल टाइल्स। अगेन इसमें भी हम स्टोन फिनिश दे रहे हैं, पंच दे रहे हैं, शुगर कोटिंग, मेटालिक, ग्लॉसी, मैट, वुड, रस्टिक, और हर कलर टोनालिटी पे है। सो दिस इज अ वाइड रेंज वी आर हैविंग इट। With this manufacturing side, I'm finishing it. I'm open for any question and answers to discuss in detail. If I taken you through the very quickly because of the time, I'm open for the questions.
Yeah. I'm taking you through the minerals as you listed. Materials. Gagan. Yes, Yeah. First. Tell me, sir. So actually, as I mentioned, we use 3 different mineral category for a formulation of body. Body in the sense, जो tile का back side में where you are seeing the actual finish of the body, that we will call as a body, which will actually define the product behavior, product parameters, and also product finish also. इसमें specially body consists of 3 as I told. Again, clay means ये actually जो sedimented clay particles है, जो main clay formulation की point of से बात करेंगे. इसमें Al2O3 alumina, 2SiO2 silica, and 2H2O water. This is the chemical formulation of other clay minerals. जो clay minerals को जब हम fire करेंगे, H2O will evaporate, and aluminum and silica, major 2 oxides will form the basic formulation. उसी तरह का flux metal जो फेल्सपर कहते हैं, फेल्सपर में भी अगेन alumina रहेगा, silica रहेगा, either K2O रहेगी, Na2O रहेगा, means like sodium, potassium. ये 2 main component रहेगा along with alumina and silica. जब हम ये 3 formulation like alumina, silica and potassium or sodium, एक formulation में हम triangle body बनाते हैं, उसमें certain ratio रहेगा. Average हम बात करेंगे, alumina करीबन 30% रहेगी, silica around 60% और 10% जो है potassium. ये जब हम फायर करने के लिए या हीट करने के लिए लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनेगा. इसका जो फायरिंग टेम्परेचर है वो विस्टैंड करने का 1250 तक विस्टैंड करेगी. बट आप जैसे जैसे टेम्परेचर इसको एडजस्ट करते रहेंगे, इसका प्रॉपर्टी और बिहेवियर चेंज होता रहेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसमें एक ग्लॉसी फेज बनेगा. जो ग्लॉस फेज पोटेशियम एक्चुअली एक्ट एज ए फ्लक्स बिटवीन अल्यूमिना एंड सिलिका. जब ये ग्लॉसी फेज बनेगा, आपका टाइलों में विट्रिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा. ये विट्रिफिकेशन प्रोसेस डिफाइन करती है आपका मेजरली आपका टाइल का वाटर प्रेशर को डिफाइन करेगा. अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ये विट्रिफिकेशन ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली आपका लो वाटर प्रेशर रहेगी. ये आपका टाइल को डिफाइन करता है. Sir, can we replace any material like plastic, textile waste for as replacement for tiles materials? No, because ceramic metal based on the clay only. Okay, if you replace clay with any other raw material, again it is a clay only, not any other. Because the property what you are looking at clay and ceramic tiles is different if you replace with any other artificial materials. Sir, we are doing. Yeah, done. Sir, we are studying final year civil engineering. Sir, actually we have chosen this topic as our final year project, manufacturing of tiles, and its application on IoT. Sir, like we are trying to manufacture a tile which should be having less weight but more bending resistance, sir. So we are thinking of it, sir. So we are taking some of the materials which can replace it with plastic, textile waste, black cotton soil clay. These materials we are using, sir. So we are thinking of to. Hey, you can use any material and make a tile shape, but it doesn't have a property of ceramic. Ceramic having a property, one is water absorbing resistance. से अगर कोई भी टाइल अगर आप सरफेस की पॉइंट ऑफ से देखते हैं, आप व्हेन यू यूज ऑन द सरफेस इट वोंट अब्सॉर्ब द वाटर. ओके,
other material which you define, either it is a wooden base or cloth base or anything, it will absorb water. So ideally, in a laid condition, if the water is absorbed by any material and if you don't dry on time, it will damage the material itself. Whereas in tile case, it won't, because a tile won't absorb the water and the water will be remain there. It won't damage the tile. It is easy to clean, easy to dry in compared to any other material. That is one of the main advantages of the tiles in generally. That's why everybody prefer to go for a tile instead of any other alternative finishes. Hope I'm answered you properly. Sir, like partial replacement of materials, sir, with these materials, plastic. Now, can we do it, sir? Plastic, the temperature, if you say, the plastic material withstand up to certain temperature. Say, for example, normally 200 degree, 300 degree. Even if it is a thermo resistant plastic or the polymers, if you are using, it will go maximum beyond to 600 degree. Above that temperature, it will catch fire and it will damage. Whereas a tiles, it will resistant till 1250. If even I'm talking about lowest temperature also, it is 1100 degree for the glazed surface I'm talking about. In such cases, whatever the material you are using, it cannot be called as a tile replacement with a other material like a plastic. Plastic again, it is all dependent. Certain having a disadvantage for the plastic, because when you keep the material open for a sunlight or open spaces, it will deteriorate. It will deteriorate its finish, its appeal. Hence, it won't give the life in comparison to tile. Yeah, for a lighter weight in the market, there are a few tiles coming with a lesser than thickness of 5 mm, 3 mm. There are tiles available with a ceramic base only. So it is always a replacement for a lesser weight, especially on for the wall cladding, wherever applicable. Yep, please. Hello. Yes, sir. Any other questions, sir? There was a question after manufacturing a tile, what is the basic life period of a tile of standard size? Sir, life period, it all depends on the how we are using the material. Okay. Ideally speaking, the tile won't give life minimum of 10 to 20 years generally, but it all depends on the how we are using the material. Means how we are maintaining the surfaces and also how we are handling the tiles, because the tiles are by nature ceramic. Obviously, ceramic tiles are more brittle in nature, brittle. So if any tiles getting impact load, you will say normally, the tile tend to have a breakage. Other than this, normally if you are using any tile on properly laid condition, means आपका basement level पे है और आप जो उसका addition के लिए cement या cement adhesive use किया, properly install किया, tile will give life 20 years, 30 years can be given, even more. But it all depends on how we are utilizing the product. अगर आपने surface में कोई heavy weight table रखा है या cot रखा है या furniture रखा है, and you are pulling the cot and all furnitures one side, there will be a chance of getting a scratch, and there will be a chance of getting a displacement, chip off. We need to use certain methodologies to maintain the finishes for furniture as well as furniture for the floor also.
So like the way, if you use and maintain properly, the tile will give life of even more than expected. Okay, sir. You have explained nicely, but there was a question after the tiles going shop. What is the warranty or guarantee period you give to the customers? So normally for installed material, we give normally 2 years as a warranty for the technical aspects, not for the life. Life and all depends, as I told, it is all depends on the maintenance of the tiles, how you are handling it. Okay, for the technical parameters, like I told, one of the key parameters is a crazing, and second key parameter is any strain marking or any dust deposition or application point of view. So you can say, if it is a technical feature which is agreed between the customer and a manufacturer, that parameter will say it is a warranty. But beyond that, we don't consider as a warranty. Okay, sir, got it. Because yes, tell me please. Sir, like we are thinking of applications based on IoT, sir, like to produce electricity using these tiles, using a basement of piezoelectric materials, shape gradient materials. We are thinking of producing electricity by using these materials in application in crowded areas, sir, like some malls and some crowded areas in wedding halls. Like this, we are thinking of these applications, sir. Can we achieve this using these tiles, sir, which should have less weight, and it should help to regain its shape of the piezoelectric material, which to produce electricity? There are ceramic material, especially piezoelectric point of view, say, but tiles I don't see have much impact. There are metallized ceramics available in the market, industrial ceramics you can call it. They have better application. For a floor and all, we have anti-static tiles where it will pass on the electricity to earthing purpose. That way it will be suitable. For a piezoelectricity point of view, say, the tiles is not the suitable product. They have certain other category product will normally term as a metallized ceramics, where they will use steatite or zircon based raw material. They will have that property, even quartz, silica base also, alumina base also. That is a pure raw material, oxide based, not the tiles. Hope I given correct information. Yes, sir. Yes, sir. Sir, can we give industrial visit to your site, sir, please? Yeah, in Pune we don't have any facility. Sir, no, sir. We have Hoskote, sir. We are studying in MVG College of Engineering in Hoskote. So can we give visit? Sir? You can write a mail asking for a date. Then definitely company will allow you for the industrial visit for the factory. It is not an issue. Okay, sir. Okay, sir. So for the educational purposes, normally we allow, but the current COVID situation, I think you need to take a formal approvals and that. Okay, sir. That can be possible. Any questions, sir, on the manufacturing side? You have explained the process very understandably, so I think no one would have question further left. So I request our Mr. Nitin Kumar sir, who is the marketing head. So as we have all known the process of how the tile is being manufactured, so we wanted to know what is the marketing techniques and all. So I request here Nitin sir to share their experience and guide all of us. Before handing over to Nitin, I will put it like this. If any concerns or clarifications required on the technical aspect, you can write a mail to bhanu.prakash@orientwell.com so that I can able to give you proper reply with a detailed explanation. Maybe because of the time constraints, I'm not giving much time here. Please make a note. bhanu.prakash@orientwell.com. If you are having any questions, maybe some people.
Mail ID, sir. Bhanu.prakash, BHANU.PRAKASH Okay, sir. at orientbell.com. You can leave your email ID Sir, in the chat box. Everyone will Yeah, get yeah, it. I am putting my Yes, sir. email ID so that if any unanswered questions, you feel free to contact me so that I can Sir, give a proper Oriental reply. official mail ID can you give, sir, to ask permission for industry visit? The same email ID you can ask for, like whatever the current communication has happened, that Okay, sir. also I can we can arrange for it. Okay. Okay, sir. Okay, sir. This is I given my email ID. Please make a note of it. And if you are having any concern, please feel free to discuss anytime. Okay. Thanks. Handing over to Nitin. Yeah, thanks, Banu. Thanks. Hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. It's visible. Okay. So before I explain you know what is the sales process of selling for especially for tiles, let me take you through let me take you all through a very interesting category we hold in our portfolio, which is called as forever tiles. I will keep my language, Hindi and English mix, because during the chat I have learned that there were few students who were requesting the conversation to happen in Hindi, and there are few enthusiasts who wants this conversation to be in English. So the language I will use is a mix, so we all can understand, and I will try to explain you in the most easiest language possible. So like Bhanu explained the entire process of how from a clay to a conversion of a final tile, and that tile is being finally gets into the market, and our beloved customers do purchase those tiles. So within these categories we have a very interesting product called forever tiles. And forever tiles, as name suggests, means a tile which you use for a longer period, for a good substantial period, wherein you lay the tile and you can be rest assured. But how this tile actually being called as a forever tile, हम इसको forever tile क्यों बोलते हैं? तो उसका अपना एक reason है, which I will explain you in my later slides. But this tile is a very unique product in our portfolio. ये बहुत ही अलग प्रोडक्ट है हमारे पूरे ओरिएंट बेल के पोर्टफोलियो में. सो हम इसको फॉरएवर टाइल क्यों बोलते हैं? इसका सबसे बड़ा the one and the foremost reason is, of course, it has a very long life. I mean, once laid, this tile can go up to 7, 8, 10 years also. And the second biggest reason is that these are the most scratch proof tile we have. The biggest concern in any customer's mind today is, what if I buy a tile, I lay in my house, and during my shifting of things, let's say moving sofa from one room to another, moving my almirah from one room to another, so and so forth, ऐसी काफी सारी चीजें घर में ही होती हैं जो जो हमारे हाउस होल्ड कस्टमर्स होते हैं जो मूव करते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही होता है. हम लोग बेड मूव करते हैं, हम लोग गैस सिलेंडर्स मूव करते हैं. ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जो हमारे टाइल का रिस्क बढ़ा देती हैं कि उस टाइल पे कोई स्क्रैच ना लग जाए. सो
ये टाइल फॉरएवर टाइल की जो हमारी रेंज है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्क्रैच प्रूफ टाइल है. मतलब एक कस्टमर जो इस टाइल को खरीदेगा, he can be rest assured that like Bhanu explained during his conversation that there are more scales. There are more scale from 1 to 10. So this is product more scale 8. Means अगर आप इसको किसी आयरन के मेटल से या क्वार्ट्स एक स्टोन होता है, अगर उससे भी इस टाइल को स्क्रैच करेंगे तो ये इजीली ये टाइल स्क्रैच नहीं होगा. So this product is that's why being preferred in the market. Like I explained you that of course customers look for a tile which is scratch proof, but why do we need, what are the practical reasons in our day-to-day life why a tile needs to be a scratch proof tile? So as we all know, a floor tile bears it all. एक floor tile के साथ ही होता है. We move so many items in our home, in our commercial spaces. It could be probably a hospital wherein the stretchers moves, other things moves. It could be schools जहाँ पे students they move their bench and chair. It could be any place of such nature जहाँ पे regular movement is really is considered to be really high. So like I explained you, hospital is one of the place जहाँ पे सबसे ज्यादा stretchers की movement या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मूवमेंट या ऐसे आइटम्स की मूवमेंट्स चलती रहती है. वहां पे यू नीड अ सरफेस जहां पे आपने एक बार टाइल अगर ले किया और आपने रेगुलर स्ट्रेचर्स या कोई भी इस तरीके का आइटम अगर आप मूव भी करते हैं तो उस पे स्क्रैच ना आए. दैट बिकम्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल यूजिंग एनी ऑफ the hospital's facility, the tiles are not getting scratched. In our offices, that can be the second biggest space wherein the regular movement of our chair, tables, etc. is the maximum. Let's say our cafeteria in the office, or probably the floor of the office. So it becomes paramount important that that we lay something on our floor which reduces the risk of tiles getting scratched. School, like I mentioned, students, you can't be on their head all the time. They sometimes act mischief, and they probably move their the benches very regularly, which may lead to scratch on the surface. So for such areas, you need a product which is absolutely scratch proof. Like I gave you an example that at our home, it becomes paramount important because these are very practical things happens at our home, etc. That we move our almirah, we move our sofas, washing machines, and I think the biggest worry for any household today could be moving a cylinder. So moving these items give you a lot of risk of tile getting scratched. So how do we protect our floor from that risk? So like I mentioned during my initial chat that we are more scale 8 product. So ordinary or everyday material will not scratch the tile of forever tile range. So it will not that using our regular day-to-day item can scratch the surface. During Bhanu's presentation, when he was explaining more ratings, he was mentioning different items. I will take you all in a little detail that what all are the most hardness scale level, the mineral attached to it, and where are we. So like I mentioned that these talc, calcite, fluorite, aptite, and other, so these are the regular day-to-day items which reference to the material.
So fingernail, or for that matter, platinum or knife blade, such item also cannot scratch the surface of a forever tile. So we are more scale 8. We, while making these tiles, we in fact use items like quartz and topaz to check whether the surface of our tile getting scratched or not. But we do claim that, you know, anything less than more scale 8 cannot scratch the tile of the surface. Beyond that, it is only more scale 9 and more scale 10 which can actually scratch the surface of our forever tile, which is 10 is maximum, which is diamond, and I'm sure nobody will try with a diamond to scratch the tiles. So since Bhanu has already taken you all in the details of how the tiles getting made and what are the surface and how the tiles actually get made, but this is just a little brief of how forever tiles get what is the body structure of a forever tile. So this is his body part. We actually apply a special engobe on the surface of the tile, and we do a 2 glaze coatings, which actually makes it as a high resistant tile which does not let these scratches to happen. You all will be surprised. I'm sure you all would love to know this, that since the evolution in the category, many brands have introduced many options for the customers, uh, suiting to their demand and what could be the best solution to the problem around us. And on this same journey, we have also introduced something very interesting in the category. We made this tile as germ free. Our forever tiles are actually a germ free tile, which essentially means that we actually apply a special layer of nanoparticles on the tile. This actually this nanoparticles surface actually help these DNA of the germs to get rupture. It does not let the germ to be multiply uh, further in time and keep killing the germs. So we can assure you that, you know, Orient belt tiles kills up to 99% of the germs within the 24 hours of its application, and it keep killing the germs with the applications. So this is one of a kind of a product in our portfolio, and not many brands have it, and if they have it, they don't talk about this property. But I think during this time, we all have learned that, you know, washing our hands, wearing a mask, these normal day-to-day life behavior have actually become an essential, and these become even more essential for a day-to-day, day-to-day things we use in our life. And so, and any floor is also part of our life. Any floor wherein, probably while we work, while we probably sometimes we sit also, it becomes really important that we are getting something additional to the, or something extra to what is generally available or generally is having awareness amongst the people. So we are extremely proud of this product. This product is available all across India, and we especially recommend these products in the usage of hospitals. We recommend these products in schools as well, because kids and school students sometimes you can't hover them all the time, and they do drop things, and they don't wash their hands all the time. So it reduces the risk of anyone getting germ through a surface. So it ensures that you are not getting any surface to skin contamination.
We actually have got certified through through a service which is a lab service available in Mumbai. We've got this certification against what percentage of germs this tile kill within the application. Within 24 hours, this forever tile uh, start to kill the germs. So this I've already explained you, but these are absolutely essential wherein we see the high traffic area that these tiles are the best fit. So it can be a place like hospital, or it can be a commercial spaces like probably railway stations, airports, etc. So like I mentioned, forever tiles are also germ free, which gives you a very distinguished, safety plus scratch proof of, assurance. Also ensure that, you're just not using a product, but you're using a product which also, kills your worry of tile getting scratched. So this was about one of our special category or the product. Beyond that, I will not share any screen for that, but I would like to tell you all about the our normal course of action, how the products getting manufactured in a facility to finally getting sold in the market. Usually when we produce a product in our three plants, one is in Secunderabad, one is in Hoskote, and one is in one is in Dora. Like in one visual, Bhanu has shown that how we assort the product, how the products get packed in the in a carton box, and then finally it gets delivered to our different facility. When I say facility, it is our dealer points or our channel partners point. We are almost selling at 2,000 different exclusive channel partners in India, wherein they sell a product right from J&K to bottom in Kerala also. We are also available in a place like Nepal, wherein we're selling these products. So the normal process of selling this product is from company to a channel partner. Channel partner is appointed by the company. Company actually further bill, or we can say further transfer the product to this channel partner against a certain amount. And from there we display our products, and the customers comes and choose their product. We are one of the most revolutionized approach company, wherein we certainly believe that in past 1.5 years we had many lessons, and one of the lesson is that how India has adopted to digital marketing. So we are very much active on a digital media platform. We are available on all our products are listed on our website. Any customer can go and see our products there. In fact, we have a facility wherein a customer can visualize that how these tiles actually look at their home. I mean, by simply going to our website, using our application, you can visualize that how a particular tile will look at your particular room or at your particular space. We also running a current campaign wherein if in case somebody wants to see that how will this particular tile is actually appears or look, he can sample a tile in just 99 rupees from our website. So he can order the tile from our website, this tile reaches to their house, and he can probably see that what if I lay this physical tile, or I lay this physical tile on my floor, how will it look? So this is limited to few states, but we're doing such activations also. We love to hear to our customers, so we are very much digitally active. We have our
social media pages, our Instagram page, our Facebook page. We are very much active on LinkedIn as well. We believe in visual appearance of 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 any service or product. So we are very much active on our YouTube channels. We are very much active, keep giving visual videos to our customers so they can go and actually learn about the products. So you can all visit to our Instagram page as well, Orient Bell Instagram page as well, Orient Bell Facebook page as well. You must visit our Orient Bell website as well, and you can also go to our YouTube page as well. Yes, sir, surely. Yeah, sure. So this was through our channel of digital plus how we sell in our retail channels. So beyond this, we are also available, or we actually approach to a lot of government institutions, what we call GET, and we also go to these big builders, let's say Signature Global, and many of others in India. And we try to tap them all across part of country. So right from starting from Jammu to, like I mentioned, till Kerala. So we go to these direct big builders as well. So this is what we call as PET, private enterprises. So we are available in our retail channel massively. We are available in our GET channel massively, and we are also available in our PET channel as well. So since you all are learning this subject, so I will encourage all of you to go and visit any OBTB store nearby you. You will see many of the tiles. We have thousands of plus thousands of plus of shades. You can go and see the tiles which you just saw in the visuals to actual reality. So you can visit your nearest store, and you must go and see that what is a vitrified tile versus what is a ceramic tile, what is a wall tile versus what is a floor tile, what is a big size tile versus what is a smaller size tiles. So this is one of the opportunity. Plus we have a very we have what we call is COCO, company owned company. These are the exclusive stores of company, various part of country. One we have in Pune as well, for the students of Pune, and we have in Delhi and other parts, Chandigarh, Lucknow, and cities like this. So these are exclusive stores where we display all our products. So wherein somebody, let's say anyone who is interested to see the entire range of Orient Bell, he always has an opportunity to go visit and see all our distinguished product. It can also include our forever tiles. It can also include our PGVT or other variety of tiles, GVT tiles, etc. It also gives you an opportunity to first see the exclusive range being introduced with the latest design possible. We are one of the most I will not shy away from the fact that we are one of the most aggressive company today in tile industry. We keep on giving new options to the customers. We keep on launching new designs, since this industry works on on the fast pace of giving option to our customers. So these are our 3 or 4 major channels of sales. I would love to hear any question from you people. You can ask me any questions related to how we sell it, or any other questions related to our conversation. Yes, sir. Extremely thank you. You have given a very nice talk. There was a question. Instead of question, we can say it's a major part that we have a huge number of upcoming engineers or businessmen, we can say. So what is a scope in this field for upcoming students in business or job field in this tiles industry? See, if you see, there is a major thirst, not only by private sector, it is by any sector today. If you look at our government and the initiative, look at with the pace of highways are being built in India,
look at the so many of the hospital and especially those aims being announced in India. If you see, there has been a lot of push by the government on developing the infrastructure. With it, you might recall your life 10 years before, from today versus now. As many buildings we see around us, what will they use? They will obviously use products which are tiles today, because there was time when the builder used to give a floor which is of probably chips based, and something which is made with cement, etc. But it has been substituted with tiles. It has been replaced by tiles. So it is just not one area. Any infrastructure you think today has to have a product mix of every. It will be a cement also. It will be a bath fitting also. It will be a wire also, electricals also, and importantly tiles also. So it's one of the fast growing industry. It is one of the industry wherein we have an opportunity in any field, be it its production, be it its R&D, be it its quality control, be it sales, because people do make a lot of name. People are actually getting excellence in this field, and really growing. Be it can be a category led role, which currently I am also handling one. I work on few category of Orient Bell. I work as category managers. Above me, I have a manager. Parallel to me, there is another colleague of mine, and we have a separate team for categories like double charge and GVT. So you all are students, so to say that it's a growing industry, and it, since India for another 20-30 years, it'll keep on building, it'll keep on, the construction will keep on happening. So you have scope in all the possible areas of construction. I mean, especially tile. I mean, in a tile company, you may find different roles and get an excellence. Yeah. Any other question? Any other question from anyone? Sir, there are questions in the chat box. You can read. Okay. New Italian marble is available in market, which Mr. says. This is a technical question. I would request Bhanu to address this question. Yes. Give me. I'm answering, sir. Yeah. It is a tricky question. Italian marble. It is Italian marble, which is again from the rock or from the manufacturing process of finished for the surface finish. There is a similar product is there, that is we will normally quartzite stone. It is a synthetic product. It is almost equivalent or a similar finish to the marble also. So that entire process is almost similar to our process, but they will use a resin based material, which they will heat and convert into solid. Means it is like a thermosetting resins, you can say. So they use and they apply for a marble processing. So in this, again, there is again one more property of heat resistant or fire resistant, you can say. So in the market, there are a few products available. Like majority of the, one example I can put it like Classic Marble is one of the company which is based at Silvassa. As example, I'm putting it. They do manufacture of marbles from a natural source,
as well as synthetic source. Synthetic means again it is a process based. So we need to see and evaluate and understand what is a real and what is a synthetic. Based on that only selection process will happen. Second question, manufactured marble looking or granite look appearance having the tiles. How long they can sustain? Because it is a resin based and it is having a thermosetting property also. So the life will be almost similar to marbles also. But again, it is all depends on the choice and cost. So in comparison, tile or synthetic marble or natural marbles, tiles are always having an edge to get the price as well as the same properties and life. Hence, I always suggest go for a tile in comparison of any marbles. Unless there is a precise or customer demand, I go with a marble or a synthetic product. That is a customer choice. But as a technical parameter point of view, say the tiles are having more advantage or edge in terms of technical parameter, in terms of life, in terms of installation point of view also, because of a tile coming with a different thickness parameter, whereas marble again you need to go with a minimum 15 to 20 mm thickness. So when you are going for 15 to 20 mm thickness, again it is a question of building weight or the tonnage when you are laying on multi-storage buildings or a single one. These are application sites we need to see, which is the one of the key parameter while taking a selection of the material. Is it clear, Mr. Ankit? Yeah, thank you. Thank you to confirming. Yeah, any other questions? No, sir. Thank you. Okay. Okay, sir. Thank you very much for your precious time and guidance. I hope everyone has been clear with tile manufacturing and the advertisement process, marketing process. So if anyone has any queries or questions, they can ask. Or here we have Seema Madam from Pune Orient Bell. I will ask them to give some guidance or share their location at Pune. So anyone if want any visit at Orient Bell showroom in Pune, they can obviously visit there. So sir, we can finish the meeting. I will give the vote of thanks to the whole team of Orient Bell. So thank you for removing your precious time and giving a guidance for our students. We have recorded this session and we will reach till our each and every student of our groups. And this was live on YouTube also. So many students have joined there also. Yes, so they want address. I will. So here's the corporate office address and Orient Bell Pune showroom address. So everyone can note it down from here. There is mobile number also given. Since you have recorded this session, please share the link with us also. Yes, sir. Definitely, I will share. Yeah. Okay, sir. Thank you. We will end up this meeting. Sure. Thanks a lot, and I wish all the very best to everyone. Sorry, we were short of time, so my another colleague Divya couldn't Yes. share much of her information on these subjects, and
on this area, but I think we have covered all the possible part of Yes, fully. yeah, from manufacturing to finally getting in selling it to a customer. And we really wish all very best of luck, and we hope to see that some of you visiting our stores, experiencing the product in person. So thank you so very much, everyone. Yes, sir, definitely. And we will next time again tie up with you with new students, new learners. Sure, we would be happy to do that in the session. Thank you. Yes, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks a lot Thank you, sir. for giving opportunity. Thank you. Ending of the meeting. Thanks everyone for joining.